وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We begin from verse number 71 of Surah Yaseen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Do not they see that we have created for them of what have made our hands the cattle, then they to it become owners. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, and we have subdued them for you. Sorry, and we subdued them for them. فَمِنْهَا, then from or then of it some they ride upon, and of it some they eat. And for them in it are manafiu, are benefits, wa masharib, and drinks. अफला यशकुरून, will then not they give thanks. क्या नहीं वो देखते कि हमने पैदा किया उनके लिए जो बनाए हमारे हाथ चौपाए, फिर वो हो जाते हैं उसके मालिक, और हमने ताबे किया उनको उनके लिए, फिर उसमें से कुछ पर वो सवार होते हैं और उनमें से कुछ से वो खाते हैं, और उनके लिए उसमें बहुत से फायदे हैं और पीने की चीजें भी, फिर क्या नहीं वो शुक्र करते। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून ला यस्ततीऊना नस्रहुम व हुम लहुम जुंदुम मुहज़रून फला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रूना व मा यु'लिनून. And they have taken from besides Allah gods so that they may be helped. La yastatiyuna nasrahum, not they will be able to help them, while they for them will be forces brought forth against them, in bracket against them, brought forth against them. So let not grieve you qawluhum, their words or their statements. Verily we know what they conceal and what they reveal. और उन्होंने बना लिया अल्लाह के अलावा औरों को माबूद ताकि वो उनकी मदद करेंगे, नहीं वो ताकत रखते कि उनकी मदद करें, बल्कि वो होंगे लश्कर जो आगे ले आए जाएंगे उनके खिलाफ। बस ना गमगीन करे आपको उनकी बातें, बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। So these false gods whom these people worship will be brought as a army against these people who worship them. आज ये लोग अल्लाह को छोड़कर औरों की परस्तिश करते हैं। जिन जिन शुरका की ये परस्तिश करते हैं, ये तमाम शुरका एक लश्कर की तरह उनके खिलाफ आकर जो है गवाही देंगे अल्लाह के सामने और बोलेंगे, we do not know who these people are. They will disown them altogether. They will totally disown them and say, sorry, we don't know who these people were. If they were worshipping us, we were not aware, and we never told them that they should worship us after we are dead, or come to our graves and prostrate and supplicate to us. हमने ऐसे कभी नहीं कहा था. So they will become their adversaries, opponents. उनके जो है खिलाफ दुश्मन बन जाएंगे. अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फैज़ा हुआ खसीमुम मुबीन वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम क़ुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून. Does not see man that we have created him from semen? Then behold, he became a disputant clear. Khasimun Mubin, disputant clear. And he puts forth for us examples while he forgets his own creation. He asks, my yuhyil izama wahiya ramim, who will give life to these bones when they become rotten? Say, will give it life the one who created it for the first time. Wahuwa bikulli khalqin alim, and he with every creation is all knower. The one who made for you from the tree green fire, فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ, then behold you from it kindle, means kindle the fire. क्या नहीं देखता इंसान कि हमने पैदा किया उसको नुतफे से, फिर गिरा वो हो गया एक खुल्लम खुल्ला झगड़ालू,
और वो पेश करता है हमारे लिए मिसाल, और भूल जाता है अपनी खुद की पैदाइश को। पूछता है, कौन जिंदगी देगा इन हड्डियों को जब वो बोसीदा हो जाएंगी? कह दीजिए, जिंदगी बख्शेगा उसको वो जात जिसने पैदा किया पहली मर्तबा, और वो हर चीज, और वो हर चीज को जो उसने पैदा किया खूब इल्म रखता है। वो जात जिसने बनाया तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग, फिर तुम उसको सिलगाते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वन आफ्टर द अदर टेलिंग द पीपल who brought you into existence in the first place. Where did your origin begin? From dust, then semen, and gradually you metamorphosed inside the womb of the mother and came out as a child. And today you have become an adult and you are challenging Allah subhanahu wa ta'ala himself and associating partners with him. How could you ever become such a proud, arrogant, contentious person and dispute about the existence of Allah itself, the one who brought you into existence? वो जात जिसने तुमको जिंदगी बख्श कर दुनिया में वजूद में लाया, उसी के खिलाफ तुम बकवास करते हो, औरों को शरीक ठहराते हो, अपनी खुद की पैदाइश को भूल गए हो। कहाँ हुई तुम्हारी शुरुआत? मिट्टी से, खाक से, जिसकी कोई हैसियत नहीं, एक गंदे पानी से। अब तुम जो है उस गंदे पानी से जो वजूद में आकर आज इंसान की तरह खड़े हुए हो, इतना किबर। याद रखो, तुम गंदे पानी से जो है तुम्हारी वजूद शुरू हुई थी, तुम्हारी इब्तिदा वहीं से शुरू हुई थी। In spite of you being initiated from a semen drop, which is worthless, despicable, today you are challenging and you have become so proud and arrogant. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says, all these means of conveyance, cattle, and all the benefits that Allah has given you, where did you get it from? Didn't Allah provide you all this? कि अल्लाह ने तुम लोगों को ये सब चीजें नहीं दिया? तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरा किया, तुमको चौपाए दे, तुमको जो है खाने पीने के सामान मुहैया किया, सब कुछ अल्लाह ने दिया। अफला यशकुरुन, फिर भी क्या तुम अल्लाह का शुक्र नहीं करोगे, शिर्क करोगे? पता है तुम्हें इसकी क्या सजा तुम्हें मिलने वाली है? तुम औरों को शरीक ठहराते हो, तुमको पता है कि ये जिनको तुम शरीक ठहराते हो, व्हाट विल दे डू ऑन द डे ऑफ क़यामत टू यू? दे विल कर्स यू, they will become your enemies, adversaries, opponents, and they will wash their hands off and tell Allah, we do not know these fellows. Khalas. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, try to use your brains and try to behave intelligently, use your intellect, study the Quran, understand the teachings of Islam, understand the purpose of your existence and your very coming to this world. Where will you go from here? What is going to happen in the next world? Everything is conveyed by Allah in this book. If only you study this book and get yourself and your lives attached to it. Today you're asking Allah subhanahu wa ta'ala, who will give life to these bones? Did Allah bring you into existence when you were non-existent itself? When Allah can bring something into existence which is non-existent, what is the problem for Allah subhanahu wa ta'ala to bring into existence something which existed at one point of time? तुम्हारा नाम और निशान नहीं था, तुम काबिल जिक्र कोई इंसान ही नहीं थे। तुम कौन हो लोग जानते भी नहीं थे, दुनिया नहीं जानती थी। अल्लाह ने तुम्हें वजूद में लाया। जिस जात ने तुम्हें तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमने मौजूद किया, तुमने वजूद में लाया, उस जात को क्या मुश्किल है कि तुम जो है इस दुनिया में आए और मरकर जो है मिट्टी में मिल जाओगे, तुमको दोबारा जिंदा करना? व्हाट इज द बिग डील फॉर अल्लाह? नथिंग। पलक झपकने तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत को जो है कायम कर देगा और तुम सबको जो है महशर के मैदान में खड़ा करा देगा। There's a twinkling of an eye, everything will be done. It's only a matter of kun fayakun for Allah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजऊन. Is not the one who created the heavens and the earth all able upon creating the like of them? Why not? وهو الخلاق العليم. He is the supreme creator. He is the all knower. Only his command, when he decides a thing, that he says to it, kun, be, fayakun, then it becomes. So glory be to the one in whose hands is the dominion of everything. Wa ilayhi turja'un, and towards him you shall be returned. क्या वो नहीं है वो जात जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को, पूरी खुदरत रखता है इस बात पर के पैदा करे उन जैसे को? क्यों नहीं, बल्कि वो तो खल्लाक है, वो तो सबसे बड़ा पैदा करने वाला है, खूब जानने वाला. उसका मामला जब वो इरादा करता है किसी चीज का कि वो कहता है हो जा, फिर वो चीज हो जाती है. बस पाक है वो जात जिसके हाथों में बादशाहत है हर चीज की. वह इलेही तुरजऊन, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे. He does not have to consult, he does not have to plan, he does not have to think, he does not have to fear, he does not have to worry about anything. He can take unilateral decisions and in his own inimitable style, and he is having all the power to execute it without fearing the consequences either. वो ऐसी जात है, वो ऐसा एक परवरदिगार है हमारा जिसकी ताकत की कोई इंतहा नहीं. जिसकी खुदरत को कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता, जिसकी खुदरत के बारे में कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता. बड़े खुदरत वाला, बड़ा जबरदस्त है हमारा परवरदिगार. वो सिर्फ फैसला करे, इरादा करे, वो चीज सिर्फ कहता है कुन, चीज हो जाती है, खलास. सो ग्लोरी बी to Allah subhanahu wa ta'ala, the one in whose hand is the dominion of everything, has control over everything, everything. And everything is one day going to return to him, including you and I. An excellent surah, Surah Yaseen. Very powerful surah. Once again, telling you, please do not recite this surah as a ritual. For heaven's sake, don't recite this surah as a ritual. Our parents would have told us and advised us, our grandparents would have told us and advised us. It's been a family tradition to get up in the morning, and whether you read namaz, whether you perform your salah, whether you recite any verse of the Quran, they don't care. Read Surah Yasin, they would have told. With that limited knowledge, what they had, they have told us. No comments on that at all. In good faith, they have said, may Allah give them the rewards for it. But we are now, alhamdulillah, intelligent enough. We have, alhamdulillah, got exposed to the Quran. We understand that every surah, every verse, and every word of the Quran is powerful and significant for our lives. So let us not go by the family traditions anymore. You want to recite anything, recite it, understanding it. Never do anything as a ritual. सूरह वाक़िया पढ़ लेना, सूरह तबारक पढ़ लेना, सूरह यासीन पढ़ लेना, सूरह रहमान पढ़ लेना, दिस पढ़ लेना, वो पढ़ लेना. Okay, वजीफे अपनी जगह. Your parents, your grandparents, or my parents, my grandparents also told me this. We respect them, we honor them for in good faith. They have told us all this. हम उनकी पूरे एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं. वो अपने कोशिश से कम हमको जो है ये सूरह तो कम से कम याद करा दिए, या हमको जो है पढ़ने की तरगीब दिलाए, वगैरह वगैरह. अल्लाह उनको उनका अजर देगा. लेकिन जो ही हमें जो है अभी इस कुरान का एक्सपोजर मिला है, इन सूरतों के जो है मीनिंग, मतलब हम समझ चुके हैं, we will not anymore recite it as a ritual. I'm not stopping you from reciting it in the morning. If you had the habit, please continue. I understand its meaning. But don't confine your connection with the Quran only with Yasin or with Tabarak or with Waqia or with Surah Rahman or what else you read, etc., etc. Don't confine it to that. Recite the verses of the Quran. Start from Surah Fatiha and go up to Surah Nas. Do it in a sequence form every day. 1 or 2 pages, whatever is possible by you. Don't recite the verses of the Quran, be it any verse, any surah, including Surah Yasin or any other surah, as a ritual. Keep that in mind. कोई आयत,
कोई सूरा कुरान का रस्मी तौर पर मत पढ़िएगा। मेरे अम्मी बोले, मेरे अब्बा बोले, मेरे दादा बोले, मेरे नाना बोले, मेरे नानी बोले, read that in their own place। उन्होंने बोले अल्हम्दुलिल्लाह, उनको अल्लाह उनका अजर देगा। उनको जो उतना ही इल्म था वो अपनी बात कह दी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला has alhamdulillah given us this exposure and opportunity to study the Quran, to understand these powerful surahs. Let's go through them, ponder and reflect over the verses. Never read it as a ritual and never read it as a formality. Understand its meaning and understand what it says.